45 years old male presents with episodes of palpitation, sweating, headaches and anxiety lasting about 30 minutes for the past 6 months. His blood pressure during these episodes is 180 by 120 and he's tachycardic at 110 blood beats per minute. ECG shows sinus tachycardia, lab tests revealed plasma metanephrine and 24-hour urinary catecholamines, while an abdominal MRI shows a 4 centimeters right adrenal mass. Based on this presentation, what is the most likely diagnosis and the underlying cause of hypertension? And what is the recommended management approach? And the second scenario is for Professor Haroon Aziz Baba. Sir, please say a few words on that. Assalamu alaikum. आवाज आ रही है मेरा ख्याल है. You can hear me. Well, ये जो आपने सीनियरों पेश किया है, अगर वैसे इसको देखा जाए तो जो कैटाकोलामीन सेक्रेटिंग ट्यूमर होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा टाइप, वो आपकी तवज्जो उस तरफ ज़रूर जाएगी. लेकिन एक चीज़ इसको वाज़े कर दूं, there are number of conditions which mimic pheochromocytoma. That's important, differentials. That is very important to differentiate. जब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखेंगे तो एक होता है सीडो फियोक्रोमोसाइटोमा या सीडो हाइपरटेंशन, एक और चीज़ है. फिर एक चीज़ है लेबाइल, इंटरमिटेंट लेबाइल हाइपरटेंशन. तो ये प्री प्रोसीजरल हाइपरटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी है, एक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, एक ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी है. तो ये डिफरेंट सीन्स हैं जो आपके all my colleagues must be knowing these, but especially my juniors and PGRs should know these, क्योंकि ये बड़ी सटल चीज़ें हैं जो आप आम मे बी a doctor sitting as a GP may not be aware of it. So especially the PGRs should be aware of it. कि आपके पास ऐसा मरीज आ जाता है जिस तरह ये सीनियरों एक पेश किया गया है, तो आप ये तो बड़ा वाजे बता रहे हैं कि राइट एड्रिनल मास भी है, 24 आवर यूरिनरी कैटेकोलामीन्स भी हैं, भी हो गई हैं, मेटानेफ्रीन भी बढ़ गई हैं. लेकिन अगर एक सीडो जिसको आप कहते हैं ना सूडो फियोक्रोमोसाइटोमा, उसमें भी मेटानेफ्रीन बढ़ जाती हैं. बिल्कुल. लेकिन वो वक्ती तौर पे बढ़ती हैं. सही. उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि वो जब आप उसकी बेसलाइन देखेंगे 24 आवर्स में तो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी. सही. जब उसको एक एपिसोड होगा तो वो बढ़ जाएंगे, तो दे में go into the abnormal range. But this only objective is that along with all those common scenarios with Professor Haroon really narrated very beautifully, we should keep this also in mind along with a rare condition but can happen with your patient. Yes. Just continue, sir. अब लेबाइल हाइपरटेंशन भी थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं, ये तो मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर एक केस है. तो लेबाइल इंटरमीडिएट लेबाइल हाइपरटेंशन है, उसकी क्या कॉज है? आप किसी को ब्लड प्रेशर देखते हैं उसका जनाब 180/100 गया हुआ है, दूसरे लम्हे आप देखते हैं तो उसका नॉर्मल है. तो ये बेसिकली जो देखा गया है, इट इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इज द मेन कॉज. इसलिए इसकी ट्रीटमेंट भी, या आप उनको एंग्जियोलिटिक्स जिसको आप कहते हैं ना, ये एल्प्राजोलाम वगैरह ये देते हैं, या कई दफ़ा एंटी डिप्रेसिव्स देते हैं, सेरेट्रोलिन वगैरह. Unfortunately, we are treating every high blood pressure with Capotin and Lasix. This is wrong. This is what I want to come to. So you have to be very much clear. Your mind should be very much clear. आपने जो कुछ पढ़ना है, जो कुछ करना है, वो आप क्लियर हो. अगर आप क्लियर नहीं हो तो मरीज से पीछे हट जाए. This is what I teach to my PGRs. Please don't touch the patient because you will do wrong more than good. किसी और को, अपने सीनियर कुलीग को आगे कर दें. तो ये चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था, और माशाल्लाह मुझे फारूक साहब ने टाइम दिया है बताने का, तो इसमें आप बड़े क्लियर जहन से जाएं
इसी किस्म की जिस तरह सीडो का मैंने जिक्र किया है, सीडो हाइपरटेंशन भी होती है। उसमें क्या होगा, उसमें भी आपका बीपी चढ़ जाएगा, फिर नीचे भी आ जाएगा, लेकिन उसकी वजूहात और होती हैं। उसकी वजूहात ये होती हैं कि कोई उसका पुराना इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, तो वो दैट इज व्हाट इट इज लीडिंग टू। बट इन दीज केसेस this is mostly related to labile hypertension, is related to stress and anxiety. इसका ऊपर जाएगा फिर नॉर्मल आ जाएगा। कोई इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, जिस तरह किसी ने एग्जाम दिया है, आप वेट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, हम सारे इसी में से गुजरे हैं, वो एकदम आपका बीपी ऊपर चला जाएगा। Very nicely elaborated. So we have to look for overall patients, not just blood pressure reading to treat our patient. We can take one or two comment or questions from the audience, then we can move on to our next scenario. Yes, Ira. Thank you, sir. I would Please just like to take 30 add that there is a term called incidentaloma. If you Sorry? there is a term called incidentaloma. Whenever we do a scan of the abdomen, we may see cysts or lesions in the adrenals. So pheochromocytoma is an important differential to always suspect. But we should not be trigger happy to label people even based on a finding in the adrenals. We have to discuss with the radiologist, possibly get another expert, a senior colleague or an endocrinologist before we label somebody with a disease. So thank you for this So comment. it's Very actually- right. I think you have made the right comment. Yeah. But the thing is, when you are suspecting patient with pheochromocytoma, then you have to look it in a broadly Yeah. based manner. You have to find out all the things, other things which are related, which are symptoms and signs of pheochromocytoma. Along with this presentation of high metanephrines and normetanephrine, which are raised above the baseline. Completely agree. It's not just the imaging which you mimic you to diagnose pheochromocytoma, the clinical background, the biochemical changes within the body, and then combining it with your imaging finding. Dr. Tariq, And just not last to comment. forget that all the pheochromocytomas are not in adrenal alone. Agree. Right. So Sympathetic that's, yeah. I mean, you may have all the biochemical and clinical and may not find it in adrenal. Very then nice. you have to look Sometimes for you may sometime- miss a adrenal mass, but still it can be a pheochromocytoma. Very nice. Yes, Let's move on. this is a very small percentage Yeah, but which are very lying outside the zone of the adrenals. Okay, let's move on to our third scenario. जी 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 सॉरी यार ये जी जी बोले Assalamu alaikum. My name is Dr. Asif Nizami and I am working as a neurologist at Combined Military Hospital. I just wanted to add one thing. When we come across the scenario of episodic hypertension, so we should not forget a very common scenario of migraine. So this also comes with episodic rise in blood pressure because we commonly see dysautonomias with migraine. So if we come across patients who have episodic hypertension, we should ask for features of migraine, particularly the headache, which is very peculiar. It is unilateral, moderate to severe throbbing headache, and may be associated with nausea, vomiting, photophobia, and phonophobia. So this is a very common clinical scenario because almost 50% of my OPDs usually is based on these patients. So we shouldn't forget. this Yes, I common agree. That's the etiology. crux of Yes. whole scenario that consider blood pressure raise along with clinical scenario.